पिलाने समस्त को नमस्कार। आशा करुच्ची समस्ते भल थिबो। पुणी थरे तुम माननकु मो चैनल को वेलकम। आज आम डिस्कसन करबा ओएसटीटी रो टॉप 50 पेडागोजी क्वेश्चन। ए वीडियोटी पिला माने तम पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। तम जो अपकमिंग एग्जाम आसुची निहाती पिला माने तम पई बहुत हेल्पफुल हबो। वीडियोटी निहाती शेष ताई देखिबो। देखो पिला माने आज रो प्रश्न प्रथम प्रश्न कोन कहले रे So what pedagogy means? To guide the child, not to lead the child, not to educate the child, not to understand the child. It कौन होगा पिला माने right answer? Comment कर जाना। पिला माने एकदम right answer है जो to lead the child. Pedagogy रो माने कौन रे? Pedagogy शब्दटी तमरो ग्रीक भाषा रो पेडियस आउ तमरो आगस शब्दरू आसी अछि। पेडियस रो अर्थ होची तमरो शिशु आ तमरो आगस रो शब्द रो अर्थ होची नेतृत्व देबा। यार अर्थ होची कोन रे शिशु को ठीक दिगरे नेई शिक्षा देबार कला और विज्ञान। वर्तमान पिला माने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन? एटी ऑप्शन देला पिला माने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग ना फॉर्मल अथॉरिटी ना तमरो कोऑपरेटिव लर्निंग ना तमरो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। एटी कोन होबे पिला माने राइट आंसर? तब राइट आंसर है फॉर्मल अथॉरिटी। देखिबा पिला माने तमरो टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन रे कोन हेतारे शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया रे को केंद्र बिंदु हंती। फॉर्मल अथॉरिटी प्रणाली रे शिक्षक नियम निर्देश और शिक्षा विषय रे निर्धारण करिथांती। एठी कोन हेतांती रे छात्र माने तमरो पैसिव होइथांती आ तमरो टीचर होची एक्टिव रोल धारण करथांती। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। Bloom taxonomy is a hierarchical organization of achievement goals ना तमर curriculum development ना तमर reading skill ना तमर cognitive objectives। एटी कोन होर पिला माने राइट आंसर? एटी तमर राइट आंसर है जिवो cognitive objectives। ब्लूम टैक्सोनॉमी शिक्षा लक्ष्य गुडी को तमर कोन करि थारे को श्रेणीबद्ध रूप रे विभक्त करे। कॉग्निटिव डोमेन रे देखिबा पिला माने कोन कोन तम थारे नॉलेज देन तमर कॉम्प्रिहेंशन देन तमर एप्लीकेशन देन तमर एनालिसिस देन तमर सिंथेसिस देन तमर इवैल्यूएशन होची लास्ट रे थाए। एई 6 टी स्तर तमर विभक्त करि थाए कॉग्निटिव डोमेन भितरे। या शिक्षक को पाठ्य योजना और मूल्यांकन तैयारी करिबारे सहाय्य करिथाय। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने द जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे ना तमरो ले वाइगोट्स्की ना तमरो जेरोम ब्रोनर ना तमरो बीएच स्किनर। तो देखिया पिला माने एटी कोन कहला जेपीडी तमर के देथिले रे कमेंट जणाओ पिला माने। पिला माने एकदम राइट आंसर हे जिवो तमरो ले वाइगोट्स्की। जे देखिया पिला माने जेपीडी रो माने कोन रे आ जेपीडी होउची शिशु जहा निजे करि पारे ओ जहा से अन्य मानको सहायता रे करि पारे। एही दुइटे जो अंतर थाए ताकू हमें कहिबा जेपीडी जोटा तमरो पिला माने जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डिस्टेंस। वाइगोट्स्की मत अनुसार जे देखिबा शिक्षा सामाजिक आंतरिक माध्यम रे होइथाय। शिक्षक भूमिका होउची कोन रे स्कैफोल्डिंग माध्यम रे पिला मानकू सहायता प्रदान करिथांती। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने which assessment is conducted at the end of the course of a unit? पिला माने तमरो ऑप्शन देला फॉर्मेटिव असेसमेंट ना तमरो डायग्नोस्टिक असेसमेंट ना तमरो समेटिव असेसमेंट ना तमरो कंटीन्यूअस असेसमेंट। कोन होर पिला माने राइट आंसर? पिला माने तो राइट आंसर है जिवो समेटिव असेसमेंट। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने the concept of pragmatism in education implies education is for life learning by doing ना focus on spiritual values ना तमरो strict discipline। एटी कोन होर पिला माने राइट आंसर? पिला माने तो राइट आंसर है जिवो तमरो लर्निंग बाय डूइंग। कौन कहला रे प्राग्माटिज्म
ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଏ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ। ଶିଶୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥାଏ ଶିଖିଥାଏ। ଏଇ ଧାରଣାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ରେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାय ଡୁଇଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। What is the primary purpose of a lesson plan? ତମର ପିଲାମାନେ ଏଟା ଅପସନ ଦେଲା to keep student busy, to provide a structure for teaching, to evaluate teacher performance, to satisfy the school administration. ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ आंसर? ପିଲାମାନେ ଏ ତମ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ to provide a structure for teaching. କଣ କହିଲା lesson plan କଣ ରେ? lesson plan ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ପାଇଁ ଏକ କଣ ରେ ରୋଡ ମ୍ୟାପ। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ତମର ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷାକୁ କଣ କରିଥାଏ ରେ ସୁସଂଗଠିତ ସମୟବଦ୍ଧ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। A student with dyslexia primarily faces difficulty in writing ନା ତମର calculating ନା reading ନା ତମର drawing। ଏଠି କଣ ହବ ରେ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମର ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ reading। dyslexia ର ଅର୍ଥ କଣ ରେ? ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ର ପଢିବା ଶବ୍ଦ ପରିଚୟ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ତମର ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାଏ ସେଠି ଆମେ କହିବା ତମର dyslexia। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। The law of effect was established by Pavlov ନା ତମର ଥଣ୍ଡାଇକ୍ ନା ତମର ସ୍କିନର ନା ତମର କୋଲବର୍ଗ। ଏଠି କଣ ହବ ରେ ରାଇଟ୍ आंसर? ତମର ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। The learning without burden is the main theme of NEP 1986 ନା NCF 2005 ନା Right to Education Act 2009 ନା ତମର କଠୋରୀ କମିଶନ। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ आंसर? ପିଲାମାନେ ତମ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ NCF 2005। NCF 2005 ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କଣ ରେ? ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଉପର ଅତ୍ୟଧିକ ପାଠ୍ୟଭାର ଆମକୁ କମେଇବା ଶିକ୍ଷାକୁ ରୁଚିକର କାର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଓ ଜୀବନମୁଖୀ କରିବାର ଏକ ମୂଳ ଧାରଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Micro teaching is a technique used for teaching large classes, teaching difficult subject ନା ତମର teachers training and skill acquisition ନା ତମର evaluating students। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ आंसर? ତମ ରାଇଟ୍ आंसर ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତମର ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ଯୋଉଟା टीचर ट्रेनिंग एंड स्किल एक्विजिशन। माइक्रो टीचिंग माने कौन रे? माइक्रो टीचिंग ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଉଥିରେ କଣ ହେଇଥାଏ ରେ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ଛୋଟ ସମୟ ଛୋଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏହା ଟିଚିଂ ସ୍କିଲ ତମର ଉନ୍ନତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Which stage of Piaget theory involves object permanence? ତମର ପିଲାମାନେ ପିଆଜେଟଙ୍କର ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଷ୍ଟେଜେସ ଦେଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଅବଜେକ୍ଟ ପରମାନେନ୍ସ କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ତମର ଅପସନ ଦେଲା ସେନ୍ସରି ମୋଟର ନା ତମର ପ୍ରି ଅପରେସନାଲ ନା ତମର କଂକ୍ରିଟ ଅପରେସନାଲ ନା ତମର ଫର୍ମାଲ ଅପରେସନାଲ। ଏଠି କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ आंसर? एठी तम राइट आंसर है जो पिला माने तमरो ऑप्शन नंबर सेंसरी मोटर स्टेज रे तमरो ऑब्जेक्ट परमानेंस देखा जाय थाए। ये देखिबा पियाजेन को सेंसरी मोटर पर्याय जे देखिबा तमरो केते वर्ष रे थाए रे तमरो 12 थ्रू 2 इयर्स। एठी कोन कहला ना ऑब्जेक्ट परमानेंस रे माने कोन रे आर अर्थ होची कोनोसी वस्तु आखिर जते बेले अदृश्य हो गेले मध्य तार अवस्थित बा तार स्थायित्व अछि बोली ओडे पिला भाबी थाए। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। The inductive method of teaching proceed from general to specific
ना रोल टू एग्जांपल ना तमरो स्पेसिफिक टू जनरल ना तमरो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल एटी कोन हमर पिला माने राइट आंसर तम राइट आंसर जो पिला माने तमरो स्पेसिफिक टू जनरल आज देखिबा तम डिडक्टिव मेथड ता कोन रे तमरो जनरल लु स्पेसिफिक तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा curriculum means a syllabus of the subject na the total environment of the school na all the experience provided by the school na तमरो the textbooks used in class एटी कोन हमर पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने all the experience provided by the school तमरो करिकुलम केवल सिलेबस पाठ्यपुस्तक नुहे एहा जे देखिबा ताहा तमरो विद्यालय द्वारा शिशु को दिया जाउतबा समस्त शिक्षा अनुभव तमरो पाठ्य सहपाठ्य और सह शिक्षात्मक कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करिथा जे देखिया पिला माने तमरो करिकुलम भितरे तमरो करिकुलर ता सहित तमरो को करिकुलर एक्टिविटी मध्ये इंक्लूड होइथाय वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following is an example of increasing motivation एडी पिला माने तमरो ऑप्शन देला रिवार्ड ना तमरो प्रेज ना इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ना तमरो फियर ऑफ द पनिशमेंट एडी कोन हमर पिला माने राइट आंसर तमरो राइट आंसर है जो पिला माने इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट जदी देखिबा मोटिवेशन तमरो दुई प्रकार गुटा होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन आउट होची पिला माने तमरो कोन रे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोन होइतारे जते बेले तमरो आंतरिक आग्रह आ तमरो संतुष्टि आसुतिबा प्रेरणा को हमें कहिबा इंट्रिंसिक मोटिवेशन किंतु एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोन रे जते बेले बाह्य प्रेरणा तम ऊपर पड़ी थाए जे देखबा गुटे एग्जांपल लबा इंट्रिंसिक मोटिवेशन रे कोन रे ना मु मन लगै जदी पाठ पढिबी दले मो बापा मांकर बहुत ना हबो मो बापा मा मो पई बहुत प्रशंसा पाइबे एटा होची कोन रे इंट्रिंसिक मोटिवेशन तम मन भीतर जते बेले गुटे मोटिवेशन क्रिएट होची एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कोन जते बेले तम बापा तुमको कहिले तू मैट्रिक रे भलो मार्क रखि दे मु तो पई गुटे स्कूटी आनि की देबी तम मन रे कोन आसला रे तो मन रे गुटे बाह्य तमरो मोटिवेशन तम ऊपर पड़िला तो मन रे कोन आसला ना मु जदी मन लगे पाठ पढिबी तले बापा मते दे स्कूटी देबे देले तमे पढिलो सेटा होची कोन रे ना तमरो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वर्तमान पिला माने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा heuristic method was popularized by John Dewey ना H.C. Armstrong ना तमरो Kilpatrick ना तमरो Froebel एटी के रीतिले heuristic method तो राइट आंसर है जो पिला माने H.C. Armstrong होची तमरो heuristic method रीतिले heuristic method कोन रे heuristic method रो मूल धारणा हेउची शिशु निजे खुजी सिखु H.C. Armstrong एही प्रणाली को तमरो लोकप्रिय करथिले या तमरो पिला माने मुख्यतः विज्ञान शिक्षा रे अत्यधिक कार्यकारी होताय वर्तमान में नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द फर्स्ट आईक्यू टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय लुइस टर्मेन ना तमरो अल्फ्रेड बाइनेट ना तमरो विलियम स्ट्रॉन ना तमरो डेविड वेस्लर के दिथिले रे तम राइट आंसर है जो पिला माने तमरा ऑप्शन बी अल्फ्रेड बाइनेट तमरा आईक्यू टेस्ट देथिले तमरा जे देखिबा अल्फ्रेड बाइनेट फ्रांस रे प्रथम तमरा आईक्यू टेस्ट तयारी करथिले जा शिशु को बुद्धिमत्ता मापिया पई तमरा ब्रेभवत होइଥାଏ वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा cognitive development is related to physical growth intellectual growth ना तमरा social skill ना तमरा emotional maturity एडी कोन हमर पिला माने राइट आंसर कमेंट जणा तो राइट आंसर है जो पिला माने इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जे देखिबा तमरो कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो अर्थ हेउची चिंतन स्मृति धारणा समस्या समाधान बळी बुद्धिगत क्षमतार विकास करिथाय तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने द प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग वाज सजेस्टेड बाय फ्रोबेल ना मोंटेसरी ना तमरो डाल्टन ना तमरो पेस्टालॉजी एटी कोन हमर पिला माने राइट आंसर
राइट आंसर जो पिला माने फबेल। फबेल मत अनुसार देखिबा खेल शिशुंकर स्वाभाविक कार्य होता है। प्ले वे मेथड रे आमे शिशु को आनंद सहित शिक्षा प्रदान करि परिबा। एडा तमरो ये रे तमरो फबेल कहितले। बता नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। A diagnostic test is used to identify the general intelligence of a student, na tomar specific learning gaps of a student, na tomar the ranking of the student in a class, na tomar effectiveness of a teacher. It is number plan right answer. पिलाने तो राइट आंसर है जिवो तमर स्पेसिफिक लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। डायमंड टेस्ट कोन रे गुटे छात्रर दुर्बलता और शिक्षा रे जो असुविधा अछि ताको हमें चिन्हट करी ताको हमें जो ज्ञान प्रदान करि थाउ ताको होति कोन कहले रे डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट पर कोन करि थाउ रे हमें ताको हमें जो टीचिंग दे थाउ से टीचिंग रो ना कोन कहले रे तमरो रिमेडियल टीचिंग। बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखबा। The affective domain in Bloom's taxonomy deals with manners and behaviors, na tomar physical skill, na tomar thought and intellect, tomar emotion and attitude. Eti kon number pila mane right answer. tomar right answer jo pila mane tomar option number D जोटा होजी emotion and attitude। eti kon कहला रे ना tomar अफेक्टिव डोमेन रे कोन होता है ना तमरो भावना मूल्यबोध आग्रह और दृष्टिकोण सहित तमरो रिलेटेड। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ नेचुरलिज्म, ना तमरो प्रैग्मेटिज्म, ना तमरो आइडियलिज्म, ना तमरो रियलिज्म। एटी कोन नंबर पिला माने राइट आंसर। लबने तो राइट आंसर है जिवो ऑप्शन वी pragmatism। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। What is the IQ of a gifted child? Generally considered to be above 90, above 110, ना above 140, ना तमरो below 70। एटी कोन नंबर पिला माने राइट आंसर। तो राइट आंसर है जिवो 1 above 140। तमरो 140 रु अधिक आईक्यू थिबा शिशु को तमरो कोन कुआ जायता रे गिफ्टेड चाइल्ड बोली कुआ जायता है। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा। मेटाकॉग्निशन रेफर्स टू थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मेमोरी टेक्निक्स, सोशल इंटरेक्शन, ना तमरो इमोशनल इंटेलिजेंस। एटी कोन नंबर पिला राइट आंसर। तो राइट आंसर है जो पिला माने थिंकिंग अबाउट थिंकिंग कोन कि ना मेटाकॉग्निशन अर्थ होची निजर चिंतन प्रक्रिया रे विषय रे सचेतनता होची तमरो कोन रे मेटाकॉग्निशन। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। तो सॉक्रेटिक मेथड इज आल्सो नोन एज लेक्चर मेथड, ना तमरो इंक्वायरी मेथड, ना तमरो क्वेश्चन आंसर मेथड, ना तमरो डिस्कशन मेथड। एडी कोन नंबर पिला माने राइट आंसर। तो राइट आंसर is question answer method। वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। In an inclusive classroom, the teacher should focus only on gifted children, segregate children with disability, believe that every child has the potential to learn, na follow a rigid curriculum। एटी कोन नंबर पिला राइट आंसर। तो राइट आंसर है जिवो believe that every child has the potential to learn। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। which of the following is a visual aid? तमरे की रेडियो, ना तमरो टेप रिकॉर्डर, ना चार्ट, ना तमरो ग्रामोफोन। एटी कोन नंबर पिला राइट आंसर। तो राइट आंसर है जो पिला माने चार्ट। तमरो विजुअल एड कोन रे ना विजुअल एड होची कोन तमरो शिक्षण सहायकारी उपकरण जहां देखिबा माध्यम रे शिक्षा को कोन करथाय रे सहज करिथाय। चार्ट द्वारा तुम माने कोन करथाव रे तथ्य
चित्र और धारणा को सरल और स्पष्ट भाव में देखाई तुम निजर ज्ञान वृद्धि कर बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय पाब्लोव ना तुम थंडाइक ना तुम कोहलर ना तुम वाटसन एटी कौन पे पे राइट आंसर तुम राइट आंसर ये जो पिला माने थंडाइक बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा The main role of a teacher in modern classroom is that of a dictator, ना facilitator, ना तमरा philosopher, ना तमरा information provider. इट कौन नंबर पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर जो पिला माने तमरा जणा facilitator. आधुनिक शिक्षा रे देखिबा शिक्षकर ज्ञानर दाता नुहे बरं से होचंती कोन रे शिक्षा प्रक्रिया रो सहयोगी आउ फैसिलिटर भाव से छात्रों को कौन करथांती स्वयं शिखिबा पई तमरो प्रेरित करिथांती बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फसाइजेस ओनली स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ना तमरो ओनली कोर्स स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ना तमरो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ना तमरो पीरियोडिक टेस्टिंग ओनली कोन नंबर पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट नीड इन द हायरार्की ऑफ पियाजेट ना मास्लो ना तुम एरिक्सन ना तुमरो रोजर्स एटी कोन हबरे तो राइट आंसर है जो पिला माने मास्लो मास्लो को नीड हायरार्की रे कोन होइता रे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रो सर्वोच्च स्तर होता है यार अर्थ कौन रे निजर संपूर्ण क्षमता को प्रकाश करिबा बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द प्राइमरी गोल ऑफ पीयर ट्यूटरिंग इज टू रिड्यूस द टीचर्स फॉर ओवर वर्कलोड टू फोस्टर सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग ना तमरा टू पनिश द ओल्डर स्टूडेंट ना टू सेव स्कूल रिसोर्सेस यदि कोन नंबर पिला राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने टू फोस्टर द सोशल तो कोन होबो टू फोस्टर द सोशल इंटरेक्शन एंड लर्निंग बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा A rubric is an assessment tool used to take attendance ना तो measure student performance based on criteria grade multiple choice questions organize classroom furniture ना तो कोन होबो राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने ऑप्शन और बी मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन क्राइटेरिया बर्तमान पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच टीचिंग स्टाइल एनकरेजेस द मोस्ट स्टूडेंट ऑटोनॉमी और अथॉरिटेटिव ना तमर परमिसिव ना तमर डेमोक्रेटिक ना तमर लेस फेयर एट कोन नंबर पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने लेस फेयर माने कोन रे ना एई शिक्षक एई शिक्षण प्रणाली रे कोन हेता रे छात्र माने स्वतंत्र भाव में निष्पत्ति नेबा और शिखिबा सुजोग पाई थांती बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस द थ्री पोल्स आर टीचर स्टूडेंट स्कूल ना टीचर स्टूडेंट करिकुलम ना स्टूडेंट बुक्स एंड पेरेंट्स ना तमर स्कूल सोसाइटी एंड गवर्नमेंट कोन नंबर पिला राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने टीचर स्टूडेंट और तुम्हारा करिकुलम और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज फाउंडेड बाय मेरिया मोंटेसरी ना फ्रेडरिक फोबेल ना हार्बर्ट स्पेंसर ना तमरा जीन जाकू रोसो एटी के दिथिले रे तो राइट आंसर है जो पिला माने फोबेल बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विथ एथिक्स नॉलेज
ना तुम ब्यूटी ना तुम लॉजिक एटी कौन हम पे राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने एपिस्टेमोलॉजी तुम नॉलेज सहित कंसर्न होता है बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल तमरे एटी टर्म एंड एग्जाम ना एनुअल एग्जाम ना क्विज एंड ओरल क्वेश्चन ना तमरा फाइनल प्रोजेक्ट एटी कौन हम पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर है जो पिला माने क्विज एंड ओरल क्वेश्चन जे देखिबा फॉर्मेटिव असेसमेंट कोन रे ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रे कोन होता है शिक्षा चलीथिबा समय रे छात्रन को उन्नति जांच करिया पई हमें तमरो फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज करथाउ बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स गिविंग द स्टूडेंट्स द आंसर रिड्यूसिंग द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू ए लर्नर ना तमरो पनिशिंग इनकरेक्ट आंसर एडी कोन नंबर पिला राइट आंसर राइट आंसर है जो पिला माने प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू ए लर्नर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने द टर्म टबुला रसो क्लीन स्लेट इज एसोसिएटेड विथ जॉन लाकी ना इमैनुअल कांट ना तमरो प्लेटो ना तमरो एरिस्टोटल एटी कोन हमर पिला माने राइट आंसर पिला माने तो राइट आंसर है जो ऑप्शन है तमरो जॉन लाकी बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा experimentalism is another name for idealism ना तमरो pragmatism ना तमरो naturalism ना तमरो realism एटी कोन हमर पिला माने तमरो राइट आंसर है जो पिला माने तमरो pragmatism तमरो जे देखिबा experimentalism को pragmatism मध्ये कह जाय काहे कि रे यहा अनुभव और परीक्षा को तमरो गुरुत्व देथाय बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो 5P मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड एंगेज एक्सप्लोर एक्सप्लेन इलाबोरेट इवैल्यूएट ना तमरो ईट एंटर एग्जिस्ट एंड आर ना तमरो इफेक्ट एनर्जी एंट्री इजी एवरी ना तमरो नन ऑफ द अबव एडी कोन नंबर पिला माने राइट आंसर मन रखियो पिला माने 5P मॉडल रो इंस्ट्रक्शन कोन कोन इंक्लूड करथा रे एंगेज then explore, then explain, then elaborate, then evaluate. But one next question देखिबा a teacher's most important challenge is to maintain discipline, to make the teaching learning process enjoyable, to finish the syllabus on the time, and to prepare questions paper. एडी कोन नंबर पिला माने तो राइट आंसर है जो पिला माने जोटा तमरो ऑप्शन नंबर बी होची टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल एटा होची कोन रे तो टीचर पई सबटारु चैलेंजेबल थाए बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ना तमरो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ना तमरो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना तमरो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एटा कोन नंबर पिला माने राइट आंसर है जो पिला माने तमरो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा लर्निंग बाय डूइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन ना तमरो प्रोग्रेसिव एजुकेशन ना तमरो रिलीजियस एजुकेशन ना तमरो वोकेशनल एजुकेशन एटी कोन नंबर पिला माने तो राइट आंसर है जो पिला माने प्रोग्रेसिव एजुकेशन कार्य माध्यम रे तुमको शिक्षा को कोन करि थाए रे गुरुत्व दिया जाय बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द रेशियो ऑफ द टीचर टू स्टूडेंट इन प्राइमरी स्कूल एज पर आरटी 2009 इज 1:25 1:30 1:35 1:40 तमर केते हेबर एटी राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी पिला माने राइट आंसर हेजिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा adolescence is a period of storm and stress according to Stanley Hall ना जीन पियाजे ना एरिक एरिक्सन ना तमरो कोलबर के कहितले रे adolescence period बोली storm and stress सहित के तुलना करथले
अब राइट आंसर है जो पिला माने स्टैनले हॉल। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा द ब्लैकबोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन व्हिच ग्रुप ऑफ टीचिंग एड्स। तमरो ऑडियो एड्स ना तमरो विजुअल एड्स ना ऑडियो विजुअल एड्स ना नमरो नन ऑफ दी एटी कोन ओबरे पिला माने राइट आंसर तम राइट आंसर इज ऑप्शन ऑफ बी विजुअल एड। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चाइल्ड सेंटर मेथड। एटी तमरो ऑप्शन लेला लेक्चर मेथड ना तमरो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ना तमरो डिस्कवरी मेथड ना तमरो टेक्स्ट बुक मेथड एटी कोन ओबरे पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर इज पिला माने तमरो डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड रे कोन होइता रे ना छात्र निजे खुजी शिखे जहा चाइल्ड सेंटर शिक्षार मूल धारणा। बर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिबा द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिप्लेस द एनईपी 1968 एनईपी 1986 एनसीएफ 2005 अथवा आरटी 2009 एटी कोन ओबरे पिला माने राइट आंसर तो राइट आंसर इज पिला माने हिजो तमरो ऑप्शन ऑफ बी एनईपी 1986। पिला माने समस्त थैंक यू क्लास टी केमि लागला यहां ती कमेंट रे जणाइबो रहिल पिला माने समस्त को जय जगन्नाथ।